Welcome back. In the last class, I had summarized this chapter, globalization. So before we proceed to the NCERT, let us once understand what exactly is globalization. इस chapter में हम, as a part of our political science, what we are going to study. So globalization, in another word, is the interconnection of the world. यानी कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं आज, whether it is a movement of people, whether it is a movement of goods or capital, now it has become easy. But we are not studying here economics. We are studying about political theory. So according to politics, global politics, is globalization a positive approach or negative? Whether there have been only the positive consequences or negative consequences. So in this, we would be studying about globalization, the factors that enabled it, and then its consequences in the political, economical, cultural. What is India's approach towards it? India ने कैसे stand लिया है? This is all we are going to study. Now, as a part of global politics, it is very important that we understand that today we are not restricted to our own country, but these are also the political problems that we need to overcome. So let us start the chapter along with NCERT. Janardhan works in a call center. He leaves late in evening for work, becomes John when he enters his office, acquires a new accent, speaks a different language to communicate with his clients, those who are living thousands of miles away. He works all night, which is actually daytime for his overseas customers. Janardhan is rendering a service to somebody who, in all probability, he is never likely to meet physically. This is his daily routine. His holidays do not correspond to the Indian calendar, but to those of his clients who happen to be from US. It's a call center. And a very common scenario that you can see everywhere. ये तो call center का है जहां पर they have to acquire the accent also. But even otherwise, if you are working in an MNC, you need to cater to their own, उनके according हमें देखना होता है. And yes, it is very true, their calendars do not correspond to what we have. Ramdhari has gone shopping to buy a birthday gift for his 9-year-old daughter. He has promised a small cycle and decides to search the market for something he finds affordable as well as of reasonable quality. He finally does a cycle which is actually manufactured in China but marketed in India. It meets his requirements of quality as well as affordability. He decides to purchase it. Last year, Ramdhari, on his daughter's insistence, had bought her a Barbie doll, which was manufactured in US but sold in India. तो ये हमारा second example है how globalization interconnects us. हम लोगों को कैसे ये interconnect करता है. यानी पहले में they have provided us with the employment. But of course, जो हमारा employment के जो हमारे rules and terms and conditions हैं, they are not according to Indian standards. On the other hand, if we talk about goods, तो चीज कहीं पर भी बनती है, but it can be sold across the globe. Like today, we are using all kinds of mobiles or any technology. It is actually manufactured somewhere else. It may be assembled somewhere else, and then it might be marketed by somebody else.
और ऐसे ही आपके सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहले होता था लाइक फोर्ड, इफ आई टॉक, फोर्ड वाज एन इज एन अमेरिकन कंपनी और इनका बेस भी वहीं पर था एंड दे यूज्ड टू, नाउ दे आर हैविंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एट डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके अंदर जो सामान आता है that comes from different parts of the world. They may not be buying the one good from one particular company. It might be they are getting some of the products from China, some from Thailand, some from India. So this might be the way they might be producing it. Sarika is a first generation learner who has done remarkably well throughout the school and college life by working hard. She now has an opportunity to take a job, begin an independent career which the women of her family and others never dreamt. While some of the relatives are opposed, but she finally decides to go ahead because of the new opportunities that have been made available to her generation. So now what is the meaning of this? आज उस दिन आपको जो है इन द समरी सेक्शन ऐसे, अगर आप 1980s में पैदा हुए होते तो आपको तो ये भी नहीं पता होता कि मोबाइल फोन होता क्या है. Computers had just entered into the Indian market at those, मतलब उस वक्त में they had just entered. It was there only in few areas जहां पर जरूरत होती थी, not all the areas. आज के टाइम में तो I think without computers we are not even able to do anything. मोबाइल तो बहुत दूर की बात थी उन दिनों में. Even computers were not known to anyone. तो जो फर्स्ट जनरेशन, लाइक इफ आई टॉक 1990s वगैरह के जो बच्चे थे उनके लिए इट वाज अ फर्स्ट जनरेशन जिनके लिए सच अपॉर्चुनिटीज वर इक्वल, वर इजी. उससे पहले इट वाज नॉट इजी फॉर अ वुमेन टू गो आउट. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स वर वेरी डिफिकल्ट. All three examples illustrate an aspect each of what we call globalization. For example, Janardhan was participating in globalization of service. रामधारी इज अ मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटीज. ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी कि कॉमोडिटीज आपके कैसे मूव करते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे मे बी मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस, मार्केटेड. Sarika faced with the conflict of values from a new opportunity which was not available earlier to the women. तो ये हमारे तीन पॉजिटिव है. Now let us look at the use of the term globalization in real life. और हम देखेंगे. Means there might not be that कि सिर्फ positive and there might be some negative also. Some farmers committed suicide because their crops failed. They bought very expensive. They had bought very expensive seeds supplied by MNC. अब भाई MNC से जब लिया है, पैसा दिया होगा, they might not be able to repay. An Indian company bought a major rival company based in Europe despite protests by some of the current owners. Many retail shopkeepers fear they would lose their livelihood if some major international companies open retail chains. हमारे यहाँ already हो चुका है. But yes, अगर आप आज से 3 साल पहले के लिए देखते, बिफोर द कोविड, मतलब कि प्री कोविड पीरियड को अगर आप देखते, तो दैट वाज रियली अ बिग herculean task because many of the people were feeling this. हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी. जब आपका कोविड आया था तब प्रॉब्लम क्या आई थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो कोविड के वक्त में द डिलीवरी वाज नॉट देयर एंड ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे जो सर्विसेज थी, दे जस्ट बॉट द वन. एंड बड़े सारे जो रिटेलर्स थे, दे फेल्ट कि नाउ देयर लाइवलीहुड भी, एंड नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड ऑन द सेम ग्राउंड. इनफैक्ट नाउ दे हैव कनेक्टेड टू दीस एरियाज. उन्होंने इन्हीं के साथ में अपना बना लिया है जिससे कि दे आर एबल टू, नाउ दे आर यूजिंग द सर्विस ऑफ दिस ग्लोबल सर्विस. A film producer was accused of lifting the story from another film made in Hollywood
ऐसा प्ले मतलब कि जो प्ले होता है ये तो बहुत ही कॉमन है. एवरी सेकेंड मूवी, इनफैक्ट नॉट टू नेम ऑन द रिकॉर्ड, देयर वाज वन मूवी जिसके लिए बहुत मतलब कि इतने सारे देवर रियल, मतलब उस मूवी का और इस मूवी का दोनों को साथ में दिखाया गया. मेनी सॉन्ग्स, देयर इज वन मूवी, वेरी फेमस मूवी, उसका एक एक सॉन्ग जो है इट इज फ्रॉम वन इंग्लिश मूवी. So it happens because now things are easily available. अभी क्या होता है अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ, मतलब if we tell some child to make a project, he goes to the Google, finds out everything. और अभी तो आजकल गूगल को भी छोड़ दो, एआई और चैट जीपीटी ने तो और भी बर्बाद कर दिया है. तो these are some of the negative aspects. A militant group issued a statement threatening college girls who wear Western clothes. आपका email अभी last month only there was this kind of problem was there where the mails were there to hospitals, schools and all, threatening of a bomb. This was there. These examples show globalization need not be always positive. पॉजिटिव है हमारे लिए. The wealthy customers are now able to buy so those things. एक टाइम ऐसा होता था कि जीन्स पहनना was something like wearing something out of the way. Means either वो तो बहुत अमीर है और बिगड़ा हुआ है. जीन्स एंड टी शर्ट were considered to be मतलब कि westernized or spoiled. Now it is a part of our daily. How it came? This is because slowly globalization ने gradually अपना spread किया and today we are able to adapt it. These examples show that globalization need not be only economic issue, but it can influence from rich to poor countries. Since much of the usage tends to be imprecise, it becomes important to clarify what is the meaning of globalization. Globalization as a concept fundamentally deals with flow of capital, people, and goods. These flows can be ideas moving from one part to another, capital shunted between two or more places, commodities traded across the border, and people moving in search of better livelihood in different parts of the world. Today, going abroad and having education is not a dream. It is just what we call as dream come true. Or reality hai class 12 because it is now very easy to secure admissions in colleges abroad than in our own country. Looking at the fee structure and others, now it has become. So this is how globalization has improved. That is movement of capital, movement of goods, services, idea, and people. The crucial element is worldwide interconnectedness. मतलब अब हम लोग जो है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. That is created and sustained as a consequence of these constant flows. It's not a, ये आपके पेपर में आता है, it is a single dimension. It is a multi-dimensional. Multi मतलब क्या क्या चीजें हमारी फ्लो हो रही हैं. लोग भी फ्लो हो रहे हैं, कैपिटल भी फ्लो हो रहा है, आइडियाज भी फ्लो हो रहे हैं, सर्विसेज भी फ्लो हो रहा है. यानी कि समवेयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सब कुछ हो रहा है. यानी कि मल्टी डायमेंशन उसका असर है. Not in one dimension, but in different dimensions. Culture, these must be adequately distinguished. It's wrong to assume that
ये आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो हैं उनके अंदर आ सकता है, या स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर. It is wrong to assume that globalization has purely economic dimensions. Yes, it started with economic dimension. मतलब बेसिकली क्या था कि उस वक्त में जब वॉर होते थे, तो वॉर क्यों होते थे? वॉर इसलिए होते थे बिकॉज पीपल वांटेड टू, एवरी कंट्री वांटेड टू एक्वायर द रिसोर्स ऑफ अदर कंट्री. लेकिन जब ये वॉर वाला सिस्टम खत्म हुआ, नाउ द कंट्री स्टार्टेड, मतलब कि उन लोगों ने रियलाइज किया कि हमें इकोनॉमिकली जो है कॉलोनाइज करना, एक तरफ से नॉट एग्जैक्टली कॉलोनाइज बट इकोनॉमिक एक्सचेंज चाहते थे. बट दैट, सिर्फ इकोनॉमिक तो आपका हो नहीं सकता है. स्लोली 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 ये इकोनॉमिक जो है, इट स्प्रेड इट्स विंग्स. इट वाज इकोनॉमिक, क्योंकि पहले पहले तो सिर्फ इकोनॉमिक था. फिर बाद में व्हेन थिंग्स स्टार्टेड इजीली मूविंग, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी लेना पड़ रहा था. एंड ऑल्सो नाउ इट इज प्रेवेलेंट इन द सोसाइटी, तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी होती है. 1800s में अगर आप मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आपका 9th-10th में था, इफ यू रिमेंबर इट, उस वक्त में था कि पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस, दे हैड migrated to US or Australia. That is why US and Australia both are English speaking countries. एंड जब ये लोग गए थे तो अपने साथ में ये दे हैड इवन टेकन द डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स. एक पूरी कम्युनिटी यूएस के अंदर खत्म हो गई थी. तो उस वक्त में लोगों का सिर्फ ये था कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो लोग जाते थे. देन जो आपके एक्सचेंज होता था, चीजों का एक्सचेंज होता था. टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव हुई तो इन चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ. बट उस वक्त में क्या था, देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस, कौन किस कंट्री के साथ रहता है. Later on, what happened is these things expanded. Now the politically they had to change in their policies. अगर हम चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो हमें भी उनकी कुछ शर्तें करनी पड़ेंगी. एंड व्हेन दिस हैपेंड, तो अल्टीमेटली आपका जो कल्चरल प्रॉब्लम्स थी वो भी क्रॉप अप हुई. लाइक 30 years बैक किसी ने, मतलब कि किसी को अगर आपने ऐसे डेज जो आज हम सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट वी कॉल एज मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, डेज ऑल वर दिस. हम लोग तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते थे, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे. आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. व्हाई? When my sister was young, she was very fond of noodles. And my mom used to say, तुम्हारे बाल भी नूडल्स के जैसे, एक दिन तुम नूडल्स बन जाओ. आई वॉज, मैं तो तब से ही नूडल्स नहीं खाती. आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि आई एम नो, यू नो, हेल्थ कॉन्शियस, ऐसा कुछ नहीं, इतना ज्यादा नहीं था. शी, मतलब कि उसको, बट नूडल्स वॉज समथिंग विच वॉज वेरी, यू नो, प्रीशियस थिंग. आज they are on the table because now we have adapted it. The impact of globalization is vastly uneven. It affects some societies more than others, some part than others. Like rich, they have been more affected. Drawing general conclusion that impact of globalization without paying sufficient attention to specific context. So now, why globalization took place? आपके, this can be a 4-marker question. आया हुआ है, an important question without any choice. In fact, what accounts for globalization? If globalization is about the flow of ideas, capital, commodities, it is perhaps logic to ask if there is anything novel. क्योंकि मैंने आपको बताया, even in 18th century these things were exchanged. But now that at that time the world was not interconnected. ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ आपके पेपर में आता, वो कौन से 4 फ्लोज हैं? व्हाट आर द 4 फ्लोज?
Globalization in terms of these four flows has taken place through much of human history. As I said, if you remember, making of global world, usme bhi tha. However, those who argue there is something distinct about the contemporary is the scale and speed of these flows that account for the uniqueness of globalization in the contemporary era. It has a strong historical basis and it is important to view contemporary flows against this backdrop. मैंने आपको बताया 18th century में भी when even things were not so sorted out, when there was an Irish famine तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ऐसी चीजें होती थी, but they were all restricted to the areas. While globalization is not caused by any single factor, technology remains a critical element. Earlier, when people used to travel, so in Europe, it is said in England, the rich people were only allowed to consume meat. मतलब क्यों? क्योंकि मीट वॉज नॉट इजिली अवेलेबल, वहां स्लॉटर्स नहीं होते थे, तो दूसरे कंट्रीज के अंदर से लाइव एनिमल्स को शिप में बिठा के लाते थे एंड देन दे वर स्लॉटर्ड. बट होता क्या था, शिप में एक दिन या 2 दिन तो नहीं होता, इट इज मोर देन 30 days. Some of the time the animals would be sick, some of the time they would be dead, and some of the time there would be some infection. तो उसका जो कॉस्ट भी बढ़ जाता था एंड अवेलेबिलिटी भी कम होती थी. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, आपकी यही जो मतलब कि मीट है उसको रेफ्रिजरेट करके नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड. यानी कि टेक्नोलॉजी हैज इंपॉर्टेंट, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज थी लाइक telegraph, telephone, microchip in the modern recent times has revolutionized communication. When printing initially came, it laid the basis for creation of nationalism. But today we should expect that technology will affect the way we think our personal, but also our collective lives. Printing culture in 10th standard, we have read when it came, it was only to shape up education. सिर्फ एक एजुकेशन था. आज आप देख लो, मीडिया को देख लो, मतलब नाउ वी कैन नॉट से ओनली द प्रिंटिंग मीडिया, ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, हाउ इट इज हेल्पिंग इन थिंकिंग आर हमारे थॉट प्रोसेस को. The ability of ideas, capital, commodities, people to move more easily from one part to another has made possibly because of technological advances. 1988, my grandpa passed away. And my mom had to rush from Delhi to Chennai. The cost of ticket at that time was 8,500. If we talk about today's currency, it might be something around 50,000 or 60,000. And today, if I go to Chennai, it is hardly 5,000 to 6,000. How? Technology. Now we are having more air services. Now the benefits are more, technological advances are more. The pace of these flows may vary. For instance, the movement of capital and commodities most likely be quicker and wider than movement of people across the world. हर चीज का थोड़ा एक पेस अलग रहा है. It, however, does not emerge merely because of availability of communication. अभी हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी के अंदर communication. What is important is people in different parts to recognize these interconnections. Currently, we are aware of the facts even taking place in one part of the world could have impact on another part. Anything. The bird flu or tsunami. अभी आज मैं पढ़ रही थी, there was one, I don't know, एक मतलब की था, अफ्रीका में था, but now 3 cases are there in Pakistan. COVID उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था. The first case, I think it was in China and second was in Italy, but within few days, it spread across the world. It does not respect any national boundaries. Similarly, when major economic
events take place, their impact is felt outside the immediate local, national or regional environment. Like if there is recession in, for example, अब हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा MNC, ठीक है, अब MNCs are operated from countries like US, Germany or any other developed countries. अगर वहां कोई प्रॉब्लम है, रिसेशन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, तो नेचुरल है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग या उनके अदर मतलब कि उसका असर जो है यहाँ पर भी होता है. And it has been there in the recent times also, it has been there. Like UK went into recession, तो हमारा अगर उनके साथ में relations है in the trade, तो it might affect. यानी उस कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई तो हमें भी प्रॉब्लम होगी. First, what are the political consequences? Earlier, countries के अंदर अपनी political demography थी. The government could make the rules accordingly, but now they have to think beside, मतलब कि उनको उससे अलग से सोचना पड़ता है. अगर नहीं सोच रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं there are also certain negative consequences. One of the debates that has generated a consequence on contemporary processes, ongoing political impact. How does globalization affect traditional concept of state sovereignty? State sovereignty का मतलब क्या होता है? The state is responsible for the welfare of the people. यानी कि there we need to ask. There are at least 3 aspects that we need to consider when answering this question. लेकिन अब ऐसा हो सकता है? At the most simple, it results in erosion of state capacity. Erosion मतलब अब जो स्टेट की अपनी, जो गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी थी वो नहीं रहती, जो अभी आपको मैंने बताया. That is the ability of government to do what they do. They cannot do it. नहीं कर सकते. They have to make the changes accordingly. All over the world, the old welfare state, ये इसलिए उसमें लिखा हुआ है क्योंकि पहले यही होता था कि the government is responsible for the welfare of their country, is now giving way to mere minimalist state. Minimalist मतलब जो आपके कोर फंक्शंस हैं, यानी कि गवर्नमेंट को चलाना वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन बाकी जैसे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, ये उनका काम है. लेकिन बाकी चीजों में दे नीड टू इवॉल्व अदर्स ऑल्सो. However, it withdraws many of its earlier welfare directed at economic and social well-being. In place of welfare state, it is the market that becomes prime determinant of economic and social priority. The entry and increased role of MNCs all over the world leads to reduction in the capacity of government to take decisions of their own. Why? I had already told this also. जब MNCs यहाँ आती हैं तो दे हैव सर्टेन कंडीशंस एंड वी नीड टू, अगर हम चाहते हैं कि दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट पर्टिकुलर कंपनी शुड बी एसोसिएटेड विद दैट, देन हम लोगों को उनके कंडीशंस को मानना पड़ता है. मे बी देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज सम मॉडिफिकेशन, बट वी नीड टू. एग्जाम्पल, in India, if we talk about any company before मतलब कि प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड, अगर हम प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड से पहले के लिए सोचते हैं, उन दिनों में क्या होता था? आपकी प्राइवेट कंपनीज है, आपकी 9 से 6 की जॉब है, ठीक है. अगर आप नौकरी कर रहे हो 6 बजे के बाद, अगर आप 1 मिनट भी बैठते हो आपको ओवर टाइम मिलेगी. आप 2 घंटे बैठे, आपको 2 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा. कई लोग इसका फायदा उठाते थे, 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठकर एक्स्ट्रा कमा लेते थे. एंड इन द गवर्नमेंट इट इज राइट नाउ जैसा अभी भी है, 9 to 5 की अपनी जॉब है, उसके बाद अपना झोला उठाओ और आ जाओ, ठीक है. दिस इज हाउ इट यूज टू बी. बट जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो नाउ एक कंट्री, एक कंपनी जो है उनका हेडक्वार्टर्स यूएस में है. नाउ इफ दे हैव टू मतलब कि हमारे साथ उनको एसोसिएट करना है, तो उनका जो डे का और हमारा जो है, इट विल नॉट मैच. So they would definitely want you to be awake at night.
जैसे मेरे वी हैव पीपल हु आर इन हैदराबाद in the Microsoft मतलब की organization, they have their meetings around 2 o'clock at night for Indian time. For India it is 9, उनके लिए तो it is 2, but उनके लिए तो it is morning way. तो आपको अब माइक्रोसॉफ्ट है, वी हैड टू, अब वो गवर्नमेंट अपना ओवर पुरानी वाली पॉलिसी को नहीं ले सकता है. नाउ इट इज देयर इज नथिंग लाइक ओवर टाइम. अपनी अभी किसी कंपनीज में ओवर टाइम नहीं होता है. यू वर्क टिल यू हैव टू. Even the public sector companies have now introduced these things. पहले जैसे होता था कि गवर्नमेंट में जॉब करे तो भाई चलो 9 बजे गए वापस आ गए. नाउ दे आर ऑल्सो. तो जो अब स्टेट की कैपेसिटी, इट इज नॉट ओनली फॉर देम, इट हैज टू, क्योंकि उससे हमें ही तो फायदा मिल रहा है. At the same time, globalization does not always reduce state capacity. पेपर में आपका ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता है और आपको इसको इम्पोर्ट करना है. एट द सेम टाइम लिखा हुआ नहीं आता, ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस. कुछ चीजों में तो हमारी अपनी भी चलेगी ना. The primacy of the state continues to the unchallenged basis of political community. Like हमारे यहाँ आज भी वही इलेक्शंस है, इलेक्शंस के तौर तरीके अभी भी वही है. The old jealousies and rivalries between countries have not ceased to matter in world politics. All the ongoing war right now, Israel, Iraq, and all, the state continues to discharge its essential functions, law and order, national security, and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to. State continues to import. भाई जहां उनको चाहिए वहां वो रहता है, और जहां उनको नहीं चाहिए वो वहां नहीं रहता. इस वाले जो मतलब कि ये वाली पिक्चर है ना, दिस हैज कम इन द पेपर. आई टेल यू हाउ. Indeed, in some respects, state capacities has received a boost as a consequence of globalization. With enhanced technology available at the disposal of the state to collect information about its citizens. With this, the state is better able to rule, not less. Thus, states become more powerful they were earlier as outcome of new technology. मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उनके पावर कम हो गए हैं, इनफैक्ट कई जगहों पे ज्यादा हुआ है. ऑल द डेटा ट्रांसफर टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ दिस. Now, what are the economic consequences? Economic, of course, I can say it has been more positive. But yes, there are people, there are producers, there are manufacturers who have perished due to the economic consequences. While anything may not be known about the economic facets of globalization, this particular dimension shapes a large part of the content and direction of contemporary debates surrounding it. Because यहीं से actually में शुरू होता है. A part of the problem has to do with defining economic globalization. मतलब क्या है वो? The mention of economic globalization draws our attention immediately to the role of international institutions like IMF, WTO, and the role they play in determining economic policies around the world. If making of global world, when it ends with this these two major institutions, that was IMF and World Bank. They were established under the Bretton's Woods institutions करके. Even though World Bank उस वक्त में मतलब कि it was called as the Organization for Restructuring, and IMF basically for the monetary fund. WTO जो है, it was earlier named as GATT. इसको GATT के नाम से जाना जाता था. That is आपका General Agreement on Trade and Tariffs. This was replaced by WTO, क्योंकि WTO के अंदर मेंबरशिप जब ली जाती है
तो मतलब कि उनका जो मेन पॉलिसी है, उनका जो मेन एम है वो ये है कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रही है. The developing countries are given the benefits by the developed country. There is a uniform policy, ease of trade. Yet, globalization must not be viewed in such narrow terms. Economic globalization involves many actors other than these. A much broader way of understanding economic requires the distribution of economic gains. Who gets most from globalization, who gets less? Indeed, who loses from it? What is often called economic globalization usually involves greater economic flow among different parts of the countries, so different countries of the world. Some of this is voluntary and some forced by international institution. अभी जैसे मैंने बोला कि IMF जो है, it makes sure कि the developing countries are getting the benefits of such trade. Voluntary हो जाता है, और कुछ में हम अपने आप ही, जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनमें हम अपने आप ही लेते हैं. So it takes examples at the beginning. The flow or exchange can be of various forms, like commodities, capital, people, and idea. It has involved greater trade in commodities across the globe. The restrictions imposed by different countries on allowing the imports of other countries have been reduced. Like in Britain, corn law was there, बाद में उन्होंने निकाला था. And हमारे यहाँ पर भी till 1992 we had the policy, हमारा जो था, there were trade tariffs, trade barriers. But जो हमारा LPG था, that is liberalization, privatization and globalization, इसके अंदर जो liberalization था, that basically was on the removal of trade tariff on imports. पहले क्या था इंडिया के अंदर, बिफोर 19 मतलब till 1970 there were hardly some materials which could be imported. रीजन क्या है? अगर आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड तो नेगेटिव में जाएगा. अगर आप इंपोर्ट का मतलब हमें पैसा देना है, एक्सपोर्ट का मतलब वहां से पैसा आएगा. तो अगर एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं रहेगा. एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर नॉट दैट मच मतलब कि एफिशिएंट कि दे कुड मैन्युफैक्चर एट पार. तो पहले ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे, but later on these restrictions were removed so that there is easy flow. तो वो एक आपका important है. Similarly, the restrictions on movement of capital have also been restricted. पहले ऐसा नहीं था. There might, मतलब कि अगर आप इंडियन हो, you cannot invest in any country other than, लेकिन अब ऐसा नहीं है. Now there are so many ways through which you can invest in other countries, and other country people or the companies can also invest in our countries. There are so many examples, like हमारा much controversial educational app company was funded by one multinational company. ऐसा होता है, अभी ये easy है shares में, stocks में. In operational terms, it means, already explained, investors in rich country can invest their money in countries other than their own. पहले हमारे हैं, मतलब कि in if you talk about the business studies you will be having, we have something called ADR, IDR. जो ADR होता है, American Deposit Receipt. They are issued by American company in the American stock exchange and only to the American citizens. Whereas आपके now we are having such GDRs, Global Depository Receipt, which can be bought, which can be sold across. यानी कि अगर कोई कंट्री इंडिया की है लेकिन उनका ब्रांच यूएस में है, दे वांट द मनी फ्रॉम देयर, तो दे कैन डू इट, और वहां के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. यानी कि दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनी. Globalization has also led to the flow of ideas across the national boundaries, because आज एक डॉक्टर, if he or she is operating along with the AI technology or मतलब कि video conferencing, he or she can easily take the ideas also. Internet, computer based. But globalization has not been same degree of movement of people.
Developed countries have carefully guarded their borders with visa policies to ensure citizens of other countries cannot take away the jobs of their own. And that is very important also. I would not say that it is a wrong one, but yes, of course, there is a nationwide protest in US that उनके बहुत सारे आपके जो कंट्री मतलब की जो जॉब्स हैं उनमें people from other countries, specifically from the South Asian regions, are ruling. अब कंपनीज क्यों देती है? बिकॉज उनको चीप लेबर मिलता है. बट ऑन द अदर हैंड, नाउ द कंट्रीज आर मेकिंग सच वीजा पॉलिसीज. पहले स्पाउस वीजा इजी था, अब नहीं है. In thinking about the consequences of globalization, it is necessary to keep in mind that same set of policies do not lead the same results. While it has led to similar economic policies adopted by government in different parts, this has generated vastly different outcomes. It is again crucial to pay attention to specific context rather than making simple generalized. हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ सबको फायदा हुआ है. At times there have been मतलब की negative consequences also. It has created an intense division of opinion all over the world. Those who are concerned about the social justice are worried about extent of state withdrawal caused by process of economic globalization. For example, the working hours. They point that it is likely to benefit. अभी जो आने वाला पूरा paragraph, it's very, 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 very important. मतलब पहले आपको मैंने बताया था, now it will come. They point out that it is likely to benefit only a small section of population while impoverishing those who are dependent on the government for jobs and welfare. भाई ठीक है, गवर्नमेंट हैज गिवन, उनका कहना है कि गवर्नमेंट हैज गिवन ओपन उनको जो ओपन इनविटेशन दे दिया है, लेकिन सबको तो नहीं फायदा मिलता है ना. नाउ एवरीवन कैन नॉट अटेन दोज स्किल्स. स्टिल देयर आर पीपल हु बिलीव इन गवर्नमेंट जॉब्स. Still there are people who want education और health जैसी चीजें जो है, it should be taken by government only. अब हमारे यहाँ पर even in India also right now these things are not 100% part of government. So there are so many resistance. लोग कहते हैं, and there are countries जहां पर ये चीज जरूरी भी है, the government needs to take. They have emphasized the most important from this paragraph: the need to ensure institutional safeguards or creating social safety nets. आपका बहुत बहुत important question. What is the meaning of social safety nets? यानी कि ये जो एरियाज है, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ऐसे जो एरियाज हैं, इनको it should be maintained by the government so that the benefit is given to the impoverished also. Many movements minimize the negative effects of globalization on those who are economically weak. जो लोग नहीं कर सकते वो क्या करें? तो उनका मानना है कि there should be certain net, एक बाउंड्री बनना चाहिए कि कहां तक गवर्नमेंट शुड अलाउ एंड कहां पर उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, कहां गवर्नमेंट शुड एंटर एंड इट शुड नॉट. Many movements around the world feel safety nets are insufficient and unworkable. They have called for a halt to forced economic globalization. In Hong Kong, there is a worldwide, there is a big protest along for this. वहां पे है, because उनका मानना है कि not everyone is benefited. Then there is exploitation of the people. There is more working hours and less salary. For its results would lead to economic ruin for weaker countries, especially for the poor within these countries. Some economists have described economic globalization as recolonization of the world. मतलब उनका मानना है कि ये एक तरफ से आपका जो है colonization ही है. पहले क्या था, रूलर सीधा जाकर वहां बैठता था. They used to rule in all the areas. But now what is happening is
थ्रू द ट्रेड एंड कॉमर्स दे आर रूलिंग इट, लाइक वो डिक्टेट करते हैं हमें टर्म्स को और हमें मानना पड़ता है। तो एक तरफ से दिस इज इकोनॉमिक, जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, ये डीकोलोनाइजेशन ही है। Advocates of economic globalization argue it generates greater economic growth and well-being for larger section when there is deregulation. like थोड़ा सा आप फ्रीडम दोगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। Great trade among people, sorry, countries allow each economy to do what does it best. Like पहले हमारे यहाँ जो छोटी कंपनीज थी, they were not allowed, but now anyone across the globe is able to trade with this. They also argue that economic globalization is inevitable and it is not wise to resist the march. More moderate supporters say globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting it uncritically. What, however, cannot be denied is the increased momentum towards interdependence and integration between governments. अब ये तो है, it is between the government, business, ordinary people, and different part as a result of globalization. तो अगर हम लोग इसको एक सिंपल टर्म में बोलते हैं, अगर हम सिंपल टर्म में बोलते हैं, कल्चरल तो हम बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल वो तो एक अलग सा ही एक स्टोरी है। इकोनॉमिक से क्या हुआ है, नो डाउट थिंग्स आर बिकमिंग चीपर। एज आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ एयरवेज, इट इज नाउ इजी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज आपका मन कर रहा है, मन कर रहा मतलब देर इज अ नेसेसिटी, so you have the facility that you can buy a thing from outside. You have the facility, आपके पास mobiles है, you are able to use the apps, you are able to use the services. तो economically जो goods, services, capital हमारे exchange हो रहे हैं, उसे लोगों को तो फायदा हुआ है। More generation of employment has been there. But on the other hand, if we talk about some government is giving slowly बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है। Earlier 18 companies in India were under government, but now only 3 main are there. और अब जो वो बाकी 15 है, उनके अंदर जहां प्राइवेटाइज्ड है या फिर जहां मल्टीनेशनल कंपनीज हैव एंटर्ड, दे डेफिनेटली वांट टू मास्टर अस। वो तो हमें मास्टर करना चाहते हैं, एंड दे हैव देयर ओन रूल्स। और उस वक्त में क्या होता है, देयर इज अ कंपटीशन। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, तो डेफिनेटली कौन प्रेफर करता है गवर्नमेंट स्कूल? प्रेफर हम करेंगे, डेफिनेटली हम प्रेफर करेंगे, वी वांट टू गो टू अ गवर्नमेंट स्कूल बिकॉज उसकी फीस कम होती है। बट देन व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन इट कम्स टू द बेनिफिट्स, वी से नहीं भाई, हेल्थ, यू डोंट फाइंड द डॉक्टर्स। बट अगर ये चीजों में प्राइवेटाइज हो जाए तो हर गरीब आदमी तो उस चीज को नहीं अफोर्ड कर पाता ना, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो उनका मानना है कि देयर शुड बी सम एक नेट होना चाहिए, उस पार किसको कितना मिलता। ऑन अ ब्रॉडर कंसेप्ट, we need to accept that now it is not possible to go back to that era. So in today's session, what we have learned is what is globalization, then what are the important components, what made globalization a process, and उसके जो dimensions है उनमें से आज हम लोगों ने पढ़ा है the political and economic consequences, both in the positive as well as negative form. The next what we would be having is the cultural consequences. काफी interesting है आपका cultural consequences, काफी interesting है। Then what are the resistance towards India का क्या stand है towards globalization, वो there are some like this कार्टून, ये भी आपके पेपर में आया है। दिस इज इन्वेडिंग द न्यू मार्केट्स, दिस हैज अ वेरी इन डेप्थ मीनिंग। एंड देन यहाँ पर ये जो मदर और बच्ची वाला आता है, yesterday finish your dinner, there are people in China and India who are starving, means you are thankful। और यहाँ आज हम क्या बोलते हैं, if you see the mother's dress attire has changed,
ये पेपर में ऐसे ही आया हुआ. And what she is instructing, there are people in China and India who are starving for your job. अगर तुम नहीं पढ़ोगे, this is about the economic consequence. अभी हमने पढ़ा था ना कि कई लोग जो है they are resisting कि the jobs are given to the people who are from other countries. तो यहाँ पर the mother is giving the instruction कि भाई तुम देखो, अगर आज तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारे जॉब दूसरों के चले जाए. तो दिस इज व्हाट इट इज शोन, आया हुआ है एग्जाम के. यू मे बी हैविंग सच कार्टून्स एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपके आया है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग. देन आई हैड अंडरलाइन वन क्वेश्चन, वो वाला भी आया है. व्हाट मतलब कि जो आपको अंडरलाइन किया था दैट क्वेश्चन हैज कम. ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, ये वाला आया हुआ है. एंड देन आपके इकोनॉमिक में व्हाट आर द रेसिस्टेंस. From the cultural, you will be having more questions. We will be doing it in the next class.